Hello everyone, welcome to one more interesting video by the team Procapitalist. I'm Dr. C. Purvaa Jain, your financial growth coach. This video is completely for educational purpose. So let's get started. Mazgaon Dock Shipbuilders Limited की stock prices में आज 10% का spike नजर आया. Now, this spike of 10%, is it a bubble or MDL? Is it a long-term growth stock? So, both of these questions came to my mind and I thought of कि चलो इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं एंड समझते हैं कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है. Journey so far, this company was started in the year 1774. कंपनी का IPO 2020 में आया and the stock was oversubscribed by 157 times. With this, the company is successfully working as in the defense sector, wherein 84% of the stock is being held by the government of India. Now, when we talk about the strength of the company, it is the only PSU defense shipyard company, has delivered consistent dividend and has zero debt. With this, it was interesting to look into the Q3 FY25 results, which shows very clearly that the revenue from operations of the company has been increased as compared to its Q2 and has been increased by 33% on year basis. Total income के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें, हर कुछ यहाँ पॉजिटिव और सुपर इम्प्रेसिव था. बट when I checked the order book, I was surprised and amazed to see that the company has an order book of 34,787 crore. Number of orders, value of order yet to be delivered. So this looks quite impressive. But again, the same question. Is it a long-term growth stock or is it just a bubble? So one more question around that. If it is not a bubble or if it is a bubble, is it like market has undervalued the stock? Because while I was doing the fundamental analysis, I came across certain super impressive things. So I thought of let me share the same with you and let's get started with the screener dot in. On this, we can read about the company. The company has a super impressive return on capital employed that is of 44%, return on equity of 35%. But when we look to the book value, it's just 181 per share and the current stock price is 2635. So we can see like there is a high jump from the book value to the current market prices. But what made me to bring this statement that is this stock undervalued or underpriced? Hold on for a moment. We are going to check it right away. So let's look into the fundamentals. The profit and loss statement states very clearly that company का revenue year on year basis positively 5,000, 7,000, 9,000 से 11,000 करोड़ के लेवल पर ग्रो कर रहा है. When we talk about the operating profit and when we talk about the net profit of the company, the same has been growing positively, significantly year on year basis. With this, when we talk about the EPS of the stock, the same has been improved tremendously from 12 to 15 to 27 to 48 and now 68. So isn't it super impressive? Obviously, अगर हम stock prices में CAGR देखें तो 1 year stock price has given a return of 154% and so on so far. But with this, can we make conclusion? No. Let's deep dive into the balance sheet of the company. और balance sheet में सबसे बड़ा टेंशन सीकर मेरे लिए रहा करंट लायबिलिटी, जहां अदर लायबिलिटीज, जहां as compared to equity, that is equity capital plus reserve, liabilities का proportion काफी हिला हुआ है. That is the current liabilities are almost more than the other liabilities are almost more than the equity, and that posed a question in front of me कि क्या इस business से relate में इस business में इस company से relate कुछ काफी inherent risk है, contingent risk है. So I again deep dive into the financials. Apart from that, when I look to the fixed assets of the company,
अगेन ऑन एन एवरेज मेंटेन है 800 से 1700, 800 से लेके 1000 से लेके 1500 की रेंज में. And the investments are growing at a very slow pace. But the company has invested super impressive amount in other assets. Okay. With this, I try to figure out who are the investors of for this company. And I was surprised to check that the promoters hold almost 84% here, as I mentioned earlier as well. So the government of India, that is the president of India, holds 84% stake in this company. With this, FI और DII का participation केवल 1.45 से लेकर 1.55 की रेंज में है. मतलब ये स्टॉक कहीं से भी FII और DII की नजरों में नहीं है. क्या रीजन है? अगेन क्वेश्चन केम. While public participation only 12%. Okay, sounds good. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, डिफेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है. फंडामेंटली देखें तो रेशियोज काफी स्ट्रांग है. रिटर्न्स की रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है. बट वी कैन सी अ बिग फ्लक्चुएशन, बिग hiccup in the prices. At the same point of time, some impressive elements here. Like when you compare to the peers, the peer comparison reflects that on an average, इंडस्ट्री का मीडियन पी जहां 47 टाइम्स है, वहीं इस स्टॉक का पी 38 टाइम्स है. नाउ दिस पॉइंट एक्चुअली हिट मी हार्ड. व्हाई? Why the financials, the fundamentals look super impressive. And even though those fundamentals and financials look super impressive, the P just lower than the market P. I checked other numbers as well. Return on capital employed as compared to market, super impressive. Return on equity, again, super impressive. Interest coverage ratio as compared to market, super impressive. Then I could understand that there is a reason beyond this financials. Okay. So I thought of let me check again the technical somewhere what they are talking about. So let's try to understand मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस स्टॉक की प्राइसेस का क्या बिहेवियर रहा. अगर हम ओरिजिन देखें तो करीब 1000 की प्राइस से ये स्टॉक जो भागा है उसने अपना ऑल टाइम हाई दैट इज 3000 के लेवल पर जाकर लगाया. हैविंग सेड दैट, ये है 31 जुलाई 2024 की बात, जब तक मार्केट काफी अच्छे से संभल के चल रहा है. बट उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक में काफी अच्छी खासी सेलिंग आई है और पिछले 7 महीनों से ये स्टॉक इस प्राइस रेंज में ही चल रहा है. आज इस महीने में हम देख सकते हैं कि स्टॉक की प्राइसेस में एक अप मूवमेंट दिख रहा है. अब क्या इतने हाई पर जाकर स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए? दो द financials, the prospects looks very good. So according to me, as per my experience, the answer is no. This is not the right time to buy the stock because कहीं ना कहीं स्टॉक अपने प्रीवियस हाई की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में क्या होगा, that's not clear. So we need to understand, check on the sector support as well. Having said that, अगर हम वीकली बेसिस पे स्टॉक के पिक्चर को देखें तो क्या वीकली बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स इस स्टॉक के लिए यहां लगे हैं, इस रेंज में लगे हैं. और जब जब इस स्टॉक की प्राइस इस रेंज में आई है तब तब पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हुए हैं. उसके बाद में एक पॉजिटिव मूव आप यहां देख सकते हैं. अगेन इस रेंज में ऑर्डर आने के बाद प्राइसेस में एक साइड मूवमेंट आया है. हालांकि बात आज की ही बात देखें तो एक नया डिमांड जोन यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर बना है जो आसानी से ब्रीच किया जा सकता है या हो सकता है. तो कहने का मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर
कुछ भी नहीं है स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए। अगर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की ओर आती है, सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस स्टॉक में एंट्री लेना मेरे हिसाब से आज की तारीख में खतरे से खाली नहीं है। हैविंग सेड दैट, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इट्स कंप्लीटली ओके। इट्स ओके समटाइम टू अंडरस्टैंड, टू जस्ट लुक to certain bubbles, wait and watch. All right. So the twist was here with regard to the PE. The industry PE is 47 and the company PE is 38. Now, what could be the reason that market has undervalued the stock? What I could understand is the reasons with regard to low PE could be the policy risk, which the public think एफआईआई और डीआईआई ने तो इस स्टॉक को हाथ तक नहीं लगाया है। ऑलमोस्ट 1.5% का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज दे फील सम टाइम समथिंग वेरी डीप डाइव कि एमडीएल स्टिल देयर इज एन एब्सेंस ऑफ diversified revenue streams with regard to the revenue part. And we could see very clearly that there is a business which is dependent on the orders and order books, right? So we could find an absence of consistent earnings, and being a company wherein the government holds 84%, it faces a valuation discount, right? And with this, I think it's the right time to wait and watch what could be the actions, price actions, once the stock reach the level of 3000. So I hope you enjoyed the video. You learned a lot with regard to the price action, the fundamentals, and do mention in the comment box your key takeaway and the stock which you would love to hear from my side. Till then, bye.